Working with loop constructs. A looping statement enables you to execute the same statement for a certain number of times. For this, you do not need to write the statements repeatedly. You can enclose the statements within the loop construct, and the loop construct executes the statements till the specified condition is met. Java supports the following loop constructs. First, the for loop, second, the while loop, and the last, the do while loop. In this video, we learn about the for constructs. Using the for constructs. Consider the example of the classic jumble game. You want to implement a functionality in which a user should guess the correct word in the 5 attempts only. If the user fails to guess the word in 5 attempts, the game will be terminated. For this, you can use the for loop construct. The syntax for the for loop construct is for in the bracket initialization, then second is condition, then third is increment or decrement, then in the braces statement. Our coding. In the for loop construct, the initialization statement is executed first. Means initialization means कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. कंडीशन कि किस कंडीशन पे लूप का वो होगा एग्जीक्यूट होगा. और थर्ड इज प्लस में जाएगा या माइनस में, मतलब बढ़ेगा या घटेगा. In the for loop construct, the initialization statement is executed first. It is executed only once at the beginning of the loop. Thereafter, the condition statement is executed for each iteration. If the condition statement evaluates to true, statements followed by the for statement are executed. However, if the condition statement evaluates to false, that loop gets terminated. Finally, the increment or decrement statement is executed that increments or decrements the loop. The loop continues executing statements until the conditional statement evaluates to false. In the preceding example, you can use the following code snippet. For count is equals to 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा. काउंट इज स्मॉलर देन 5, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 5 से नीचे ही रहेगा, यानी कि 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक. और काउंट प्लस प्लस मतलब 0 से 4 तक, यानी कि प्लस प्लस में ही रहेगा, बढ़ेगा. मतलब 0 + 1 होगा, फिर 1 + 1 होगा, फिर 1 + 1 = 2 होता है, फिर 2 + 1 होगा. ऐसे इसका मतलब है कि बढ़ेगा, +1 + 1 होता रहेगा. In the preceding code snippet, the count variable is initialized with 0. The loop will continue executing statement till the value of the count variable is less than 5, यानी कि 4. You can create an infinity loop by keeping all the 3 statements blank, as displayed in the following code snippet. For हमने यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, ना यहाँ लिखा, ना स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ना कोई कंडीशन दिया, ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया, तो ये इन्फिनिटी लूप के लिए हो गया. इन द प्रेसिडिंग कोड स्निपेट्स स्टेटमेंट्स विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग इन्फिनिटली. At times, after certain iterations, you need to exit from the loop. To achieve this, Java provides the break statement. The break statement stops the execution of the remaining statements within the body of the loop. In addition, Java provides the continue statements. The continue statement skips all the statements following the continue statements and move the control back to the loop statement.
The following code snippet depicts the use of the break statement within the for loop. ये तो सेम है, फॉर काउंट 0 से स्टार्ट होगा, 10 से लेस रहेगा यानी कि 9 तक रहेगा और 1+1 होता रहेगा. इफ़ काउंट इज इक्वल्स टू 7 यानी कि जब 7 होगा तो स्टेटमेंट हमारी ब्रेक हो जाएगी और काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 7 से आगे नहीं बढ़ेगा. In the preceding code snippet, the loop will print the value of count from 0 to 6. Thereafter, the loop will be terminated when the value of count will be 7. यानी कि ये 7 से नीचे तक ही रहेगा, 7 पे आते ही ये ब्रेक हो जाएगा और 7 से पहले के सारे प्रिंट कर देगा, यानी कि खुद 7 भी प्रिंट नहीं होगा. 6 तक, 0 से 6 तक प्रिंट होगा. The following code snippet depicts the use of the continue statement within the for loop. For count is equals to 0, count is smaller than 10, count plus plus, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 10 से लेस ही रहेगा और +1 होता रहेगा. If count is equals to 3, continue system.out.println count. In the preceding code snippet, the loop will print the value of the count from 0 to 9 except 3 because the control will be moved back to the for statement when the value of count will be 3. यानी कि हमने count इक्वल्स टू 3 में हमने कंटिन्यू वाली वो लगा रखी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा रखी है. कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि 3 वाली को छोड़ के बाकी सब प्रिंट होंगे, यानी कि 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 3 पे आ गई 3 प्रिंट नहीं करेगा, फिर 4 प्रिंट होगा, 5, 6, 7, 8, 9 प्रिंट होंगे. 3 को छोड़ के सारे प्रिंट होंगे.